welcome to today's Zen Living Session on how to keep motivated during and after cancer treatment with Manish Mandiwal. He is a director in a private startup and he's also a stage 3 colorectal cancer survivor. Initially, he had irregular bowel movements which he did not take seriously and was later diagnosed for colon cancer. He underwent surgery, 28 rounds of target radiotherapy, and oral chemotherapy as a part of the treatment. And right now, he's cancer free. He's blessed to have a supportive family and friends throughout the treatment. He says cancer stigma is still a predominant issue, but it is essential to provide awareness. Do not fall into the trap of so called sympathy. So, that was a wonderful session, Manish. So, welcome to today's session and over to you. One more thing, I did went through the oral chemo prior to my surgery. Like in initial days, the initial phase, I went for 28 rounds of radiotherapy, and along with the radiotherapy, I went for the oral chemo. But post surgery, I went for 4 or 5 rounds of chemotherapy, the normal chemotherapy that generally happens. So along with the oral therapy, I also went for the drip or IV that we call it, the chemotherapy. So around it took around 6 to 7 months for the overall process. The first 45 days was for the initial radiotherapy, and then surgery, and then I took radiotherapy. Then they took a month around or so, the kind of break given to the patient, and because it allows the body to settle down and allows the surgery to be done perfectly. And post surgery, I took some break around again 2 to 3 weeks, and then the chemotherapy started. Uh, so uh, so I will start how the things happened. So I was having irregular bowel movements, and for a couple of days I thought there is some issue, but I thought it's because of some food habits or something like that. So I just ignored it, and later on I come to know. I mean, within the next 10-15 days, I come to know this is not normal, because I was getting a false call of going to loo and all. Lately I realized that okay, during the false call, I found that there is some mucus or something like that is coming. So I thought this is not normal. So I went to the doctor. Initially, I thought it's normal, some issues, a gastro issue or something else. So I went to Ayurvedic doctor. The doctor asked me to, or he referred me to uh, allopathy doctor. So at that point of time, I got a hint that this is something not normal. So at that point of time, I thought, okay, I will definitely have something like cancer and all. So I was strong. I went to the doctor. Uh, he wrote some diagnosis test, and once the test, like some X-ray, sonography, and CT scan kind of thing. Post that, he found a tumor, and he did the biopsy. The biopsy result came out 4 days, and it was positive. Uh, I was in Delhi that point of time. So then I decided to move back to Jaipur, because there is a very good hospital, Bhagwan Mahavir Cancer Hospital in Jaipur. There was a couple of options for to me, like do I need to move to Mumbai, say Tata Memorial, or there is one Rajiv Gandhi Hospital in Delhi. There are a couple of more hospitals in Delhi NCR, or do I need to move to Jaipur? I discussed with a couple of friends and all. Later, I myself give more weightage to my comfort level. The more weightage was given because the cancer treatment, as far as I understood that point of time, happened along with protocols. It's not like any treatment will be given to any patient just randomly. No. So I was pretty sure that most of the doctors are qualified in our country, and most of them actually have some experience at Tata Memorial. So definitely, given a weightage that all doctors are qualified, the more weightage that I also give was to the surgery. Well, that is one of the most important part in my case. So when I made a framework kind of thing that where should I move? I moved back to my hometown, and I went to the consultant.
oncologist. He again wrote a couple of tests, diagnosis test and all. I went for those diagnosis tests. I went to a surgeon. Uh, I again consulted one of my family friend who is a doctor. He gave me one very good piece of advice, that if you want to consult doctors, do it before your actual treatment starts. You want a secondary consulting, you want another advice, or you want to consult multiple doctors, do it before the treatment starts. Once the treatment starts, you don't have the option, because if you do so, it will completely spoil the entire process or treatment. You will go in a wrong direction. So I did that. I met couple of doctors. I met doctors in Delhi. I could not move to Mumbai, so I sent my reports to one of my friend. He actually met couple of doctors there. I met couple of doctors in Jaipur. So overall, everyone told the same process, that first I need to go through the radiotherapy, then surgery, and then the chemotherapy. So that was okay. Then I found a very good surgeon in Jaipur. His name is Dr. Sandeep Jain. At that point of time, he was in CK Bidla Hospital, but currently he's in Fortis, Jaipur. I met him, and I think that was one of the best moment of this entire journey, because he spoke to me like an elder brother, like a doctor and everything. So he actually guided me. He just did not give suggestions kind of thing, but he guided me. He explained my process. Even my radiotherapist also explained the entire process. So these are not just consultant, they will write medicines on the paper, but they will explain you what actually happened, how the process will go on, and what you need to take care of it. So all these things, when a patient knows what actually happened and what will be the process, the patient feel more comfortable and more confident. So there my journey started. So initially it was okay for a couple of cycles for radiotherapy, but then the real problems arrived, and I started, like, pain started in my body. Uh, uh, and then, radiotherapy actually burn your internal organs or parts. So all the basic routine of the body, you eat and you pop it out. So the process get affected. It is at one point of time it was unbearable. Uh, so overall, the journey was like, I was confident. I felt a lot of pain, pressure. I was about to give up. I was having a fear to go to the hospital. Then it was like, okay, एक part हो गया, now like next part, that was a break. रेडियो और कीमो के बीच में there was सर्जरी के बीच में there was a break. I enjoyed that break. मेरी body को थोड़ा सा relax feel हुआ. Then there was a surgery, and surgery maybe same process. I was very confident. uh, I underwent surgery, and then I was like, okay. उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. उसके बाद में द कीमोथेरेपी में भी सेम, थोड़ा उसमें शुरू में डर था, बाद में डर निकल गया. एंड देन पोस्ट ट्रीटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आई और जितना भी मेरे अप्स एंड डाउन्स थे, आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स. रेडियोथेरेपी में अपन अप्स एंड डाउन्स कुछ नहीं थे. उसमें पेन होता है, बॉडी को अडॉप्ट नहीं कर पाती शुरू में बॉडी. सर्जरी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई अंडरवेंट 2 मेजर सर्जरीज, एंड it was one of the most difficult time. At one point of time, even I gave up, and I thought, okay, the moment I will have that energy and power to get off the bed, I will go and I will commit suicide, because I thought this is not the life I wanted. So itna tough time tha. I was very optimistic. I was always want to have the awesome life, but no, when your dream shattered, you also shattered, and it happens like you wanted to you want to give up everything. So I literally thought, okay, once I will have that energy, I will go to the railway track and I will lay down, and that will be the
the end of my life, because I cannot live a miserable life. But I think that was the only point. Chemotherapy mein it was okay. Now I will share how the thought process changed everything, and how so that was the only point that I felt depressed. Later on, after surgery also, after the chemotherapy, once the entire treatment completed, that point of time also I felt like depressed. So the cycle is like, आप confident होते हो या आप depressed होते हो. There are two level at the initial stage. फिर वो level interchange होते हैं. आप नॉर्मल होके, जो बंदा शुरू में कॉन्फिडेंट होता है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, बिकॉज हर समय आप कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते. वैसे ही हर बंदा एक लगातार डिप्रेस नहीं रह सकता. डिप्रेस्ड बंदा पर्सन विल गेट सम होप्स, एंड द कॉन्फिडेंट पर्सन विल डेफिनेटली विल लूज द कॉन्फिडेंस. अगेन इस कोसाइन और साइन वेव विल गो अराउंड, एंड एट द लास्ट द इकोनॉमिक्स विल फॉलो. इक्विलिब्रियम होता है लाइफ में. द सेम थिंग विल अप्लाई इन आवर लाइफ. All the physics that we studied, all the economics that we studied, the same thing will apply in our life. So we have to somewhere believe in ourselves, and we have to believe in the time and patience, because we have heard a lot of old people ki time is the best medicine, time is the best therapy, so that is actually the key of success. That is the key of secret of a good life. Because हमारे पास पेशेंस नहीं है. द न्यू जनरेशन इज हैविंग लेस पेशेंस. मतलब ये मेरा ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस of how I am interacting with senior people, old people and the young people. The moment you start accepting, joining, we go to somewhere, we don't like that person, we don't like the job, we don't like the person, anything, but we have to accept the things. Just take an example. I am traveling from Delhi to Mumbai. The train is dirty. Assume the train is not clean. Now I cannot create a drama over there. I have to accept that it's not clean. Let it go. My mission is to reach Mumbai. That's it. You have to focus on your mission, where you want to reach. So you have to accept your body first. The second thing is list down all the likings and interests that you have. So this is what I did. I note down what I like, what I don't like, what is my interest, what I enjoy. So one thing is I like kids. Second thing is I like pets, especially dogs. And then I'm very fun-loving person, so I like all the bullshit and fun things. Generally people generally that do on TikTok and all. So that's what I did. I called my family and relatives and their kids at my home. So that the thing started there. Badly busy, you will not think of anything else. That is the second point. The third point is offload stress or work. For example, I was working. The company I told them that I want to resign because of this reason. The company did not accept my resignation letter, and they said, okay, the moment you will not be all right, will not accept your resignation, and you are always welcome to join back. Take your time. So I offload everything. I was not doing any office work, because your schedule is not fixed. Going to doctors, coping up with all the body pains and all, coping with the stress and all. You cannot do anything other. You can't take more tension, you can't take more stress. And the most important thing is just reduce your stress level. So offload your work, offload your task, anything. You just don't need to work. You just काफी लोगों को मैंने देखा, उनको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ करता हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो कौन क्या करेगा. Honestly speaking, आप कुछ नहीं करोगे तो भी सब चलता है. आज even in a Fortune 500 company, are they fool or are you fool? अगर आप खाना नहीं खाओगे, एनर्जी कहाँ से आएगा आपको? इम्यूनिटी कैसे मेंटेन रहेगी? आप ओरल कीमो ले रहे हो, आप इतना थेरेपीज पे जा रहे हो, उसके बाद अगर आप खाना people's advice, and most importantly I can't comment कि वो सही है कि गलत है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं नहीं फॉलो करूंगा. बेटर है आप डॉक्टर को फॉलो करिए, उसके अलावा किसी पे ध्यान मत दीजिए. Then another point is secondary advice. I said कि don't follow. One more thing, आप जब भी डॉक्टर के पास जाओ हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो. डोंट आस्क इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. वो मत पूछिए. डोंट प्ले विद डॉक्टर्स और प्ले विद द वर्ड्स. आप स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछिए. आपको यू हैव टू बी द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एट योर एंड.
आप जो भी सवाल पूछो क्लियरली पूछो, डरो मत, डॉक्टर से भी नहीं डरना चाहिए. You should ask direct questions with your doctor, and don't play with the doctors, play with the words, because most of the time it happens that your attendants will ask the same questions, and sometimes in every visit, sometimes it happens that the attendance gets changed. तो आज अटेंडेंट ए है, कल बी होगा, तो ए कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो आपने भी पूछ लिया, फिर बी भी पूछेगा. सो डॉक्टर इरिटेट होते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स का टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी बिजी होते हैं. वो सेम क्वेश्चन को बार बार में आंसर नहीं करना चाहते, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ही सवाल बार बार ना करो. आपको डाउट है, टेक एक्स्ट्रा टाइम, आप पहले से पूछ लो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बता दीजिए. बट बार बार अटेंडेंस चेंज करके उनको इरिटेट ना करो, क्योंकि ये होता है, मेरे साथ भी होता था. तो आई मेड श्योर कि इट विल बी मी एंड माय वाइफ. हम डॉक्टर से मिलने से पहले दोनों बैठते थे, हम डिसाइड करते थे कि हमें कितने क्वेश्चन पूछने हैं और क्या क्या पूछना है. तो हम लिस्ट बना के लेके जाते थे, हम सवाल पूछते थे, अगर कोई रह जाता तो हम बाद में पूछते थे, अगर भूल गए तो हम वापस आ जाते थे, बीच में दोबारा नहीं जाते थे. हम अटेंडेंट से पूछते थे, एंड एवरी डॉक्टर विल हैव नर्सिंग स्टाफ. आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क एनी डाउट विद द स्टाफ, दे विल डेफिनेटली विल टॉक टू डॉक्टर एंड विल आंसर यू. Next point is avoid telling everyone, avoid telling this world that this happened to you. So मतलब ये कोई ऐसा मार्केटिंग और प्रमोशंस नहीं करना कि आपको कुछ हो गया एंड ऐसा हो गया वैसा हो गया. यू डोंट हैव टू गेन सिंपैथी. अगेन मैं कहता हूँ, सिंपैथी मत लो, सबको मत बताओ कि आपको हो गया है. आपको जिनको बताना है आप उनको बताइए. फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव्स में कोई डॉक्टर है, आप उनसे बात करिए, उनको बताइए. देयर इज समवन इन योर फैमिली और फ्रेंड सर्किल जो मैच्योर है, मेंटली काफी मैच्योर है, हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, आप उनसे बात करिए. आप डॉक्टर से पूछिए कि रेफर मी टू समवन, सपोर्ट ग्रुप एंड ऑल. यू टॉक टू सपोर्ट ग्रुप पीपल, बट आप रैंडमली इधर उधर से एडवाइस मत लीजिए. आप रैंडमली किधर भी अपना प्रमोशंस मत करिए. उसके बाद में यू आस्क फॉर हेल्प. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली ये दिस इज वन ऑफ माय वीकनेस. आई डोंट लाइक टू आस्क फॉर हेल्प. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से हेल्प लूं, और बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई वाज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं किसी को बताऊं, हर काम मैं खुद कर सकता हूं, तो मैं क्यों किसी को बताऊं. और अच्छा नहीं लगता, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट. सो माय नेचर इज आई डोंट आस्क एनीवन फॉर हेल्प. But here I have to change myself a bit, and I have to call my friends or my family and my relatives जो मुझे help कर सकता है उस journey में. For example, my kid was only 9 months old. 9 months का था मैं, my baby. उस समय वो चल भी नहीं सकता था. उसके अलावा my wife was working. तो उसको हर समय लीव्स नहीं मिल पाती. शी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो इट्स नॉट इजी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू गेट लीव ऑल द टाइम और एवरी टाइम. दे हैव टू टेक अप्रूवल्स एंड ऑल. इवन इन कॉर्पोरेट आई जनरली फील इट्स इजी टू गेट लीव्स. आप नहीं आओ तो आप बता दो कि आई एम नॉट कमिंग. इन गवर्नमेंट इट्स नॉट दैट इजी. So we took help from my wife's friend. She was a psychologist, so she's also one of the person or one of the people who literally helped me at every stage, not only from helping in the basic stuff or supporting us, but she also helped me psychologically. When I used to be depressed, I used to speak to her, I used to share what's going in my mind, what are my thoughts, and then I called up my relatives, my wife's relatives, my sisters, and not everyone relative in the sense, my sister, my parents and all. So people who can do your stuff. For example, if I'm going to hospital, who will take care of my child? Okay? That kind of help. Who will do cooking? Because my wife is not there. Who will be there to take care of my old parents? I mean, anyone whose parents is old. So you have to take help from someone who can take care of your old parents, who can take care of your kids, who can take care of your house, who can take care of the basic stuff. आपको फोकस करना है आपके ट्रीटमेंट पे.
आपको हेल्प चाहिए बाकी और स्टफ पे, सो दैट आप जब हॉस्पिटल जाओ तो पीछे घर की चिंता ना रहे, अपने बच्चों की चिंता ना रहे, अपने पेरेंट्स की चिंता ना रहे। तो आपको, जो मैंने पहले कहा था, आपको अपना जो लोड है, वर्कलोड है, वो ऑफ करना है, वो कैसे भी करके वो ऑफ करना है, लोड हटाना है, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट आई डिड। देन यू हैव टू बी वन ऑफ योर फ्रेंड जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो। डेफिनेटली हर इंसान का एक ऐसा फ्रेंड होता है, मे बी वो स्पाउस हो या मे बी समवन एल्स, जिससे आप हर चीज शेयर कर सकते हो। इन माय केस इट वाज माय स्पाउस, बट इन सच सिचुएशंस समटाइम्स आप अपनी वाइफ से नहीं बता सकते कि यार मेरा मन कर रहा है सुसाइड करने का। सो यू हैव टू बी सम फ्रेंड, सपोर्ट ग्रुप में से बहुत मिलेंगे आपको, जिससे आप बोल सकते हो कि यार मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसा कर लूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई वॉन्ट टू शाउट, आई वॉन्ट टू क्राई। सो वो आपको, जब जब आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकते हो, तो वो शेयर आप तभी कर सकते हो जब वो लेवल, ट्रस्ट का एक लेवल हो। तो वो ट्रस्ट आपको किसी के साथ बनाना पड़ेगा, एंड वो तभी बन सकता है जब आपकी किसी ना किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, किसी पे आप जेन्युइनली ट्रस्ट कर सकते हो। So that is one of the point that you can do कि आप स्ट्रेस कम ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जब लोड होगा वो कम होगा, आप रिलैक्स रहोगे मेंटली। आपका जनरली जो होता है ना, एक जाल बन जाता है प्रॉब्लम्स को लेकर, सॉल्यूशंस को लेकर, काम को लेकर, डिजीज को लेकर, वो सब क्लियर करना है। यू ऑल्सो नीड समवन हु कैन गाइड योर फैमिली, बिकॉज अगर आप तो ठीक हो गए इट्स ओके, बट आपके फैमिली वाले तो मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये ना फैमिली में हर चीज हर इंसान को अफेक्ट करती है। इट विल अफेक्ट योर पेरेंट्स, इट विल अफेक्ट योर सिबलिंग्स, इट विल अफेक्ट योर वाइफ एंड योर किड्स। सो यू नीड टू हैव समवन जो आपकी फैमिली से बात करे, जो आपके पेरेंट्स से, आपकी वाइफ से बात करे कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आप खुद तो समझा नहीं सकते ना, वो आपकी सुनेंगे। कोई इस कोने में जाके रोएगा, कोई उस कोने में जाके रोएगा, तो इट्स बेटर टू हैव समवन हु कैन टॉक टू एवरीवन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। गुस्सा आ रहा है चिल्लाओ, रोना आ रहा है रो, कुछ भी करो, डोंट अपने दिल में छुपा के मत रखो। उससे क्या होगा, आपको हैवीनेस फील होगा, हर समय बुरा लगेगा आपको, मतलब हमेशा ऐसा लगेगा यू आर फीलिंग डाउन, आप लो फील करोगे। इन माई केस ऐसा होता था कि मुझे गुस्सा आता था, मैं चिल्ला देता था। फॉर एग्जाम्पल रेडियोथेरेपी पे जब आते थे हम करवा के, सो माई वाइफ यूज्ड टू ड्राइव, बिकॉज ए पर्सन जिसको कोलोरेक्टल हो और रेडियोथेरेपी हो, वो बैठ नहीं सकता प्रॉपर्ली, उसको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। तो जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया, गाड़ी निकलती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं चिल्ला देता था। एंड मैं बोल भी देता था कि यार मैं इस मोमेंट में ट्रीटमेंट में चिल्लाऊंगा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट मी जो ये रिएक्ट कर रहा है, ये दिस इज ए काइंड ऑफ जो डिजीज है वही एक तरीके से रिएक्ट कर रही है, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ इट, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। सो शी इज यूज्ड टू इट कि ठीक है चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई इशू नहीं है। सो वो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, उससे बाद में क्या होता है, बात भी कर सकते हो, यार ऐसा फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, वो करो। देन सेल्फ पिटी मत करो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू ड्रिंक, मैंने अपने आप पे कभी सेल्फ पिटी नहीं किया कि यार इसकी वजह से हो गया। आई एम 100% श्योर उसकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिख के नहीं दे सकता उसकी वजह से हो, बिकॉज इवन डॉक्टर डोंट टेल यू कि किस एग्जैक्टली रीजन क्या है कैंसर के पीछे का, कोई नहीं बता सकता। अगर आप बोलते हो कि लंग्स में प्रॉब्लम होती है, पीपल हु स्मोक एंड ऑल, देयर वाज अ टेस्ट जिसमें आप इनहेल करते थे एयर और वो 3 बॉल्स ऊपर जाती थी। I could hold the 3 balls to the maximum time. मेरे जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी फैमिली, जितने भी रिलेटिव्स थे, हम सब ने वो गेम बन गया था हमारे घर पे, मैं ही सबसे ज्यादा ऊपर तक मैं होल्ड कर पाता था। So it's not about कि ये किसी को भी हो सकता है, you have to accept that cancer can happen to anyone because every body is different. तो कुछ सेल्स होती है जो एक्टिवेट हो जाती है, कुछ सेल्स होती है जो कमजोर होती है, दैट्स ऑल। मुझे जो समझ में आता है इतना ही गेम है, बाकी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गूगल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको बनना होता तो 12th के बाद बन जाते, अब डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग गूगल पे इतना सर्च कर लेते हैं, यू सर्च एनीथिंग, गूगल विल डेफिनेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक टू द कैंसर। दर्द हो रहा है,
कैंसर हो सकता है, वॉमिटिंग हो रही है कैंसर हो सकता है, सर दर्द हो रहा है ये हो सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। देन अनदर थिंग, अपना रूटीन बनाइए। फॉर एग्जांपल मैं पहले थोड़ा सा लेजी टाइप का था, तो बट ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट आई मेड श्योर कि मैं सुबह उठ के नहा लूंगा। तो जैसे सुबह उठ के आप नहा लेते हो, आप फ्रेश फील करते हो, आप वॉक पे जाते हो, आप फ्रेश फील करते हो, आप अच्छे कपड़े पहनिए, यू गेट रेडी। उससे क्या होता है, आपका माइंड सेट बदलता है। तो काफी ये स्मॉल स्मॉल चीजें जो आपको बदलेगी, ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा, ना कोई कॉन्फिडेंस आएगा, बट आप थोड़ा थोड़ा करोगे ना, आपका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। बिकॉज द डिप्रेशन इन ऑल, इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। देन किक आउट नेगेटिव पीपल। आई डिड इट, मतलब आई लिटरली डिड इट। पहले पोलाइटली मना कर दो, नहीं है तो आप जस्ट किक देम आउट। यू डोंट नीड टू हैव नेगेटिव पीपल, ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है और नहीं चाहिए, तो आप मना कर दो। एंड मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्टेप लिया था, मैंने सबको ही मना कर दिया था कि मुझे किसी से नहीं मिलना, जो मेरे आसपास है वो इनफ है, उसके बाद नहीं मिलना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मिल लूंगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन। कुछ लोगों को लगता है ये सब फेक था उनको लगता ही नहीं है कि मुझे ये सब हुआ था, बिकॉज हम सब सक्सेस देखते हैं ना, उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो कोई नहीं दिखता। सो मैंने दिखाना भी नहीं था जो जर्नी थी। बिकॉज मुझे बुरा लगता है जब मैं अपने आप को वीक दिखाऊं किसी के सामने, या कोई मुझे वीक देखे तो मुझे बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो एक पर्सोना है वो एक वीक कैरेक्टर या वीक पर्सन का किसी के सामने जाए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन, व्हेनेवर आई फील वीक, व्हेनेवर आई फील लो, मैं मतलब एक बैक स्टेज चला जाता हूँ। आई ओनली स्पीक टू पीपल हु एक्चुअली हेल्प मी। उसके अलावा आई डोंट स्पीक टू और डोंट इंटरेक्ट विद अदर पीपल। You have to engage yourself. एक अनदर एक्टिविटी है जिससे आप एंगेज कर सकते हैं। I started sketching, I started drawing. ये सब मेरा जो इंटरेस्ट था या थोड़ा बहुत हॉबी होता है, you start writing, वो कर लो। You do a lot of things stuff there. आप you start playing with Ludo and all, ये बेसिक स्टफ कर सकते हो, आप खेल सकते हो। बेसिक चीजें, you have to engage yourself. 3-4 घंटे तो कैसे भी करके अपने आप को एंगेज करना है, क्योंकि बाकी काम इधर उधर से निकल जाता है, बट अपने आप को एंगेज करना है, कैसे भी करके एंगेज करो। आई स्टिल रिमेम्बर माय वाइफ व्हेन यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं मना कर देता था कि लंच मत बनाना। शी यूज्ड टू कम बाय 2 PM इन समर्स। तो मैं क्या करता था, मैं खुद बनाता था उस समय, कि मैं चाहता था कि ठीक है, शी इज आल्सो इक्वली अंडर प्रेशर। तो समटाइम्स आई यूज्ड टू कुक लंच फॉर हर, कि हम दोनों खाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, शी विल आल्सो बी रिलैक्स्ड। सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि शी इज द ओनली वन या योर पेरेंट्स आर द ओनली वन जो सब कुछ देखेंगे, यार आप बेचारे बन गए हो तो आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। till the end of the life we have to support each other. That's why support groups are there, na? Together we can climb any mountain together. So you have to understand the power of unity. साथ देना एक दूसरे का, लड़ना झगड़ना नहीं है। होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, थोड़ी देर बाद में वापस आ जाइए। You have to be with each other. Then once you feel okay, join a job. This is what I did. I joined my job immediately just after my last chemotherapy. मैं बहुत हो चुका था, I was like okay. जैसे ही कीमोथेरेपी खत्म हुआ लास्ट वाला, I joined job. वापस ऑफिस जाता था, प्रॉब्लम होती थी, इतनी एनर्जी नहीं होती थी, उसके बाद में टायर्डनेस काफी आती थी, स्टेमिना नहीं होता था। बट क्या आप ऑफिस जाते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हो, सुबह जाना, आपको तैयार होना है, तो डिसिप्लिन आ जाएगा वहां से। आपका ऑफिस में जाएगा, पूरे 9 घंटे आप किधर दिमाग नहीं लगाना कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ऑफिस में अपना काम करो, ज्यादा काम है तो आप उनको बोल दो कम काम दे दो, ठीक है, सब ये सब हो जाता है। मतलब डरना नहीं। आप लोगों को लगता है नौकरी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी नहीं जाती, जाती है तो दूसरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उस सिचुएशन में नहीं है जहां पे आप एक नॉर्मल इंसान से कम्पीट कर सकते हो। तो आपको नीचे भी नहीं रहना, तो आपको अपनी लिमिटेशन समझनी है। तो वो थ्रेशोल्ड को समझना बहुत जरूरी है। यू डोंट नीड टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, वो समझो, अपनी लिमिटेशंस में बेस्ट करो। जैसा सी वी ऑल स्टडीड बायोलॉजी एंड चार्ल्स डार्विन, ही सेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी हैव टू अप्लाई द सेम रूल्स इन आवर लाइफ। Then you have to write blogs, diary, or you have to do something stuff.
I used to be like, मैं हॉस्पिटल में भी खेलता था, like me and my sister, she was my attendant, तो हम वहाँ पे we got that ball जो डॉक्टर आपको देते हैं पंच प्रेस करने के लिए, so we started playing cricket, we started playing अंताक्षरी and all, so that someone came and they said stop it, don't shout, so हमने इतना लिया ही नहीं कि कल मेरा ऑपरेशन होना है, कल सर्जरी होनी है, आज इतना प्रॉब्लम है, हमने वो लोड ही नहीं लिया, हम सोचते नहीं थे, क्योंकि सर्जरी मुझे करनी नहीं है, जो करना है डॉक्टर को करना है, मुझे यहाँ आना है, जो बोला है वो मैंने कर दिया, दैट्स इट, एंड जस्ट चिल आउट, आपको लोड नहीं लेना, मतलब ये बहुत मुश्किल है कहना, बट हो जाता है, जब आप ध्यान ही ना दो ना, हो जाता है, तो दैट इज व्हाई पीपल जनरली से अनलर्निंग इज 10 times मोर टफर देन लर्निंग, यू हैव टू अनलर्न थिंग्स, आपको हॉस्पिटल में फोकस नहीं करना, ध्यान हटाना है, टाइम पास करते रहना है, यू हैव टू बी लाइक किड्स को कोई टेंशन नहीं है, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, क्या होगा क्या नहीं हो रहा, घर में कौन क्या आ रहा है, सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही, तनख्वाह आ रही है कि नहीं आ रही, खाना उनको पता है मिल जाएगा, तो आपको इस ट्रीटमेंट के टाइम पे ऐसे ही बनना है। मेरे भी बच्चा है, मेरे भी वाइफ है, पेरेंट्स है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, ऐसा नहीं है कि भाई कहाँ से पैसा आएगा क्या होगा, बट मुझे पता था एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एक होप तो रखनी है ना, तो दैट इज अनदर पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज होप, यू डोंट नीड टू लूज योर होप, आप हमेशा होप बना के रखो। मैं तो इवन यू डू डे ड्रीमिंग, मैं ड्रीम करता था, ठीक है, आई विल बी द नेक्स्ट बिलियनियर, आई विल स्टार्टअप, मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा, आई यूज्ड टू डू ऑल दिस स्टफ्स, मैं बिजनेस प्लान बनाता रहता था, ये करेंगे, ठीक है, कीमो के बाद में ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं यही काम करता, मेरा टाइम पास हो जाता था। इससे क्या होता था, आपको एक पॉजिटिविटी मिलती रहती है, एक होप मिलती रहती है, चाहे फॉल्स होप ही हो, बट थोड़ा बहुत तो होप मिल रहा है, इतना फॉल्स भी मत लेना ना कि दिल टूट जाए, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसे अच्छा एस्पिरेशनल होना जरूरी है लाइफ में, होप इन द सेंस एस्पिरेशनल होना बहुत जरूरी है, आपको ऐसे रैंडम फॉल्स होप नहीं, कुछ तो एस्पिरेशनल होना चाहिए कि हाँ दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, तो कुछ ऐसी चीज जो आपको जिंदा रखे, ये जिंदा इन द सेंस नॉट फिजिकली बट मेंटली जिंदा रखे। Then one more important, if your body give permission or is has the strength, do travel. Traveling is amazing thing. I went to Bhutan after my chemotherapy, just after my chemotherapy. I went for 10 days hiking and then just to enjoy there, because I believe in Buddhism. तो मुझे पता है कि वहाँ पे दोनों चीजें मिलेगी, मुझे पीस मिलेगा और काफी लर्निंग होगी, देन क्लाइमेट अच्छा होता है भूटान में, एंड देन एक एस्पिरेशनल फैक्टर मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आता है जब आप नई जगह जाते हो। सो आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू भूटान, अकेला था मैं, मुझे स्टोमा था, बड़ा डर लग रहा था शुरू में, बट सब हो जाता है। when in checking it happens, what is this, you tell them this is what it is, छुपाओ नहीं, डरो मत, you tell them कि this is what it is, तो वो सब हो जाता है। आप then I used to travel to nearby places here and there, so I kept myself busy, I kept myself away from negativity, and this is all about it. One more thing, when I was in depression, ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ कह दिया या कर लिया तो भाई मैं तो इमॉर्टल हो गया एंड डिप्रेशन कैन नॉट इवन टच मी, तो भी डिप्रेशन आएगा, बिकॉज द डिजीज इज लाइक दैट, द फेज इज लाइक दैट। सो आई वेंट इन डिप्रेशन, पूरे ट्रीटमेंट में नहीं, इन द एंटायर ट्रीटमेंट नो, आई वाज एब्सोल्युटली बेटर देन ए नॉर्मल पर्सन ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट जब एक फेज आता है ना, ट्रीटमेंट खत्म हुआ, आप थोड़े से रिलैक्स्ड हुए एंड देन योर सेंसेस स्टार्ट वर्किंग एंड देन यू फील लाइक व्हाट हैपेंड टू यू। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो थोड़ा सा लगता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ, और मैं काफी पीछे रह गया। सो व्हेन आई सी माय बैचमेट्स, आई फेल्ट लाइक यार मैं पीछे रह गया उनसे, बट आई नो their life is different, the situations that's different, I was in different situations, and over a period of a time, in the sense over a period of 20-30 years अगर पूरी लाइफ का मान के चलते हो तो everything again will come back to the equilibrium position. So ये एक नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ मतलब लॉ ऑफ नेचर ही बोल दो, things will go up and down but they will settle down with time.
यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे एक इंस्टिंक्ट है बचपन से कि मैं लंबा जीऊंगा, मैं जल्दी नहीं मर सकता। मैंने पहले भी कहा था मुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरूंगा जल्दी। तो वो मेरे अंदर शुरू में सिंस चाइल्डहुड में 5-6 साल का था, तब से मुझे ये बिलीव है कि मैं लंबा जीऊंगा। अब वो बिलीव कहाँ से आता है आई डोंट नो, व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, बट वो बिलीव जब मैं छोटा था तब था, और आज वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप भी ऐसा ही बिलीव रखो कि ऐसा मतलब होता है। मैंने लोगों को देखा है, ठीक है, मेनी पीपल अराउंड मी दे गॉट कैंसर, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बुरा भी लगता है, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने होप नहीं रखी, बट आई वांट टू से वन थिंग, इफ यू वांट टू डाई, sorry, if no one wants to die, I'm sorry for that, if you have to die, die strong, don't die as a weak person, die strong. The world will always remember you, and maybe possible there will be many who will live longer with your this attitude. When people will hear about you, they will know you, they will definitely live strong, they will stay strong, they will live longer. So if you have to die strong. कमजोर क्यों मरना है? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कल मरना होगा तो मर जाएंगे। एंड कैंसर से क्या है यार, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हिच पीपल जनरली डाई। एक्सीडेंट इज वेरी कॉमन थिंग, लॉट ऑफ अदर डिजीजेस दे हैव नो सॉल्यूशन, कैंसर इज जस्ट वन ऑफ देम। यू हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट इन इंडिया। इंडिया में बहुत अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे सर्जन्स है, ट्रस्ट मी। इंडिया हैज वेरी, व्हेन cities, 2-tier cities like Jaipur have very good surgeons and oncologists, I'm 100% sure metros will have amazing oncologists, and now support groups are going to even tier 3 cities. The technology is helping them. ZenOnco is one of the example, and I really appreciate Dimple and the entire team for such a great initiative. Initially I wanted to be part of this ZenOnco team, but I don't know what pulled me down, I don't know, but I wanted to be part of this journey because this is something which is actually impacting the lives of millions of people. So this is a novel cause, you have to be support with the support group. आपको कुछ भी लगता है, you talk to someone, so don't keep it in your heart and believe in yourself, that's it. So overall ये tough है. One point I missed, if you felt depressed, जो मैंने बताया था कि मुझे भी डिप्रेशन हुआ था बाद में। तो डिप्रेशन में ऐसा होता है, you behave absurd, मतलब बहुत ही अजीब बिहेवियर करते हो, people will start hating you, मतलब so people in India don't understand depression. अगर मुझे डिप्रेशन है तो मैं अजीब सा बिहेव करूंगा तो people will ignore me, they will avoid me, and they will start hating me, मुझसे मतलब दूर रखेंगे हमेशा, even if family member. So depression की knowledge कम है. So ZenOnco को एक suggestion है, they should run some sessions on it, they should make this part of the entire cancer journey and all, because this is part of the cancer journey in every patient. So you have to consult psychologist. I consulted psychologist. ये taboo है इंडिया में कि साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना मतलब ये पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, पहले तो वो समझो। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, यू नीड मेडिसिन, यू साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाओ अगर ज्यादा हो रहा है, बट प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर, बिकॉज जस्ट लाइक कैंसर और एनी अदर डिजीज, आपको स्टार्टिंग स्टेज में ही सबसे बात करनी है, ट्रीटमेंट लेना है। आपका डिप्रेशन ज्यादा ना बढ़ जाए, तो आपको शुरू में जब प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज हो रहे, You ask your family member, are you normal? अगर उनको लगता है ना abnormal सा behave कर रहा है, behavior, then you must consult एक बार psychologist से आप मिल लीजिए। अगर वो medicines दे, आप अपना कोर्स पूरा करिए, ना दे तो एटलीस्ट सिटिंग्स ले लीजिए। There are sittings with psychologist, हर कोई psychologist medicines नहीं देता, सिटिंग्स होती है वीक की, 2 वीक की, 4 वीक्स की, आप सिटिंग्स लीजिए। मेक श्योर कि आप उस ट्रैप में ना फंस जाए, बिकॉज ये कैंसर से निकलने के बाद दूसरा ट्रैप वो डिप्रेशन ही होता है, मैंने अधिकतर लोगों को देखा, तो उस ट्रैप में नहीं फंसना। एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, एंजॉय इट। दैट्स, आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। और जो मुझे लगता था कि व्हाट आई डिड इन द एंटायर जर्नी, आई नोटेड डाउन। मे बी पॉसिबल मैं क्लियरली नहीं बता पाया, कुछ पॉइंट्स अप डाउन हो गए, मैंने इसका कोई ऑर्डर नहीं रखा, बट मुझे फिर भी लगता है कि हाँ, यही कुछ पॉइंट है जो हमें डिप्रेशन से निकाल सकते हैं।
इसके अलावा स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन तो आती नहीं है जो हमें डिप्रेशन में जाने ही ना दे या मोटिवेशन रखे। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाए। तो आपको खुद को ही करना है। यू हैव टू बी विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी लोग दूसरे बाद में हेल्प करेंगे, आपको पहले खुद को हेल्प करनी है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट, स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। कभी भी डिप्रेस नहीं होना, कभी भी नीचे नहीं फील करना कि हमारा मेरा पैकेज उससे आधा रह गया है। अरे आपकी लाइफ अलग है यार। मे बी पॉसिबल यू आर एक्चुअली द विनर इन योर लाइफ, हु नोज। हर चीज को, और मे बी पॉसिबल द पर्सन हु आर मोर अर्निंग विद यू, जो आपको रैंक्स में आगे चले गए, दे हैव मोर प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सो प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अदर्स लाइफ। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी लाइफ मेरे से अच्छी है और आप अपने आप को बुरा मान लेते हो कि मेरी लाइफ बुरी है। तो ऐसा नहीं करना। कंसिडर एवरीवन हैज द प्रॉब्लम, एवरीवन हैव प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। सो यू हैव टू बी हम्बल, you have to be empathetic, and these are my learnings. I used to be very aggressive earlier. I used to be funny but aggressive, and but now I am very much humble. I understand people when they talk, I listen and I share a lot. Pehle I don't used to share a lot of things. Now I share with people. This is how I interact more with people. This is how I learn more things from people around me. So that's it. This is a journey. Don't make it easy like 6 महीने का आपका ट्रीटमेंट है, साल भर का नहीं। This is a journey. ये लाइफ के साथ रहेगा, आपको हमेशा लाइफ में यही चीज रखनी है। So I think Annie, that was from my side. I hope some of my learnings will help people who are going through this journey. Definitely. So if anyone wants to share anything on the talk what Manish had just now, so please do so right now. Mehul ji, you want to share something on the today's session? Yeah. Hi Manish, this is Mehul here. Am I audible? Yeah, you are. Okay, yeah. It was nice to listen to your story, and congrats on beating your cancer. And I'm glad that you have come up positive and a winner. I'm also stage 4 throat cancer survivor, so I've been through these emotions, and I completely agree with you. The good part is that जो आपका पहला जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था उसने बोला आपको एलोपैथी के पास जाओ, ये सबसे अच्छा काम है। अगर आपको वो एलोपैथी आयुर्वेदिक वाला घुमाते रहता तो you would lose on time and that would be very late. So Exactly. I'm glad, and you should thank that doctor also. There are very less doctors who would do that. From what I have. Yeah, I went back to hospitals. I thanked everyone, even including the nurses, the nursing staff, and everyone, because everyone was supporting, and because of their support, I could come out of this issue. Yeah, definitely. And so, gaya wo gaya. We just start up new, and I know you are full of positivity. Keep spreading the message everywhere, and I do that as well. I keep telling people, like, it's like, the leaves, they fall, some leaves don't fall. So अपने जिंदगी वैसे ही है, जब टाइम आएगा तब जाने का है, जब तक टाइम है तब तक जीने, है ना? Yeah, it was nice to hear you. Do connect with me whenever you feel like, and hopefully if you need anything that I can help you with. So sure. Thank you for sharing your story. Thank you so much, sir. Thank you. So yeah, I think it's almost 5 o'clock. So it's our time for us to wind up. So thank you so much, Manish, for the wonderful session. And thanks everyone for being a part of the session. So yeah, bye-bye everyone.